Yeah, so welcome everybody to session number 3 of the Summer Internship 2024 under SPIRE. And I'm very happy to report that I have a whole bunch of projects submitted by all the participants, all the internees, and I'm going to go over each step by step. So yeah, let me just share my screen here. All right, the document that is open in front of you. And all of you have the chat box. So keep, question me as I go over each one of these projects. Okay. And the corrections that I'm going to be making will be in red. So you will get this document in your WhatsApp group. Don't worry about that. And you will see this document real time in the YouTube video that I'll upload. So don't worry. I mean, you don't really need to write anything, but if you work on your laptop on things that I am doing and sort of add the corrections yourself, I think you will learn better. Okay, the first research question was why people in tidy areas are more prone to allergic reactions than in contaminated areas. Okay, so what kind of a question comes into your mind when you look at this topic? Can anybody type a question? जब ये question वो देखते हैं तो सबसे पहले वो क्या पूछेंगे? They can be different questions आपकी अपनी approach के मुताबिक. लेकिन what I will ask is there research showing that tidy people actually get more allergies? Is there really any proof? I'm asking a research question, okay? So this is something really serious. Since I'm asking a research question, I need to be sure that tidy people actually get more allergies. And also, what is the definition of tidy? My research question is very vague. What is contaminated? Is it is it that the area is really dirty? It has a lot of trash. Is it that the area has a radiation hazard? Is it that the area has environmental, like air pollution? So, what exactly is contaminated? The research question needs to qualify that. That is very important. Okay, let me just see. Then there are objectives. और ऑब्जेक्टिव्स आप सब ने यानी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सुन भी लिए, आप लोगों ने शायद सीख भी लिए उस वक्त, but smart objectives are specific. So object detect why frequency, I'll just correct my mistake. Why frequency of allergic reactions are more in clean areas than in contaminated areas. So somebody is detecting, that is the verb. Remember, I told you that smart objective हमेशा verb से शुरू होता है. So, the verb is that I want to detect why the frequency of allergic reactions, frequency बिल्कुल ठीक word है, very good. आप में से बहुत से लोगों ने इंसिडेंस और प्रेवलेंस यूज किया है, जो हम इन रिसर्चेस में बिल्कुल नहीं यूज कर सकते. इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस आर पॉपुलेशन बेस्ड टर्म्स. दे कैन नॉट बी, ऐसा छोटी छोटी स्टडीज में और सर्वेज में हम इंसिडेंस और प्रेवलेंस नहीं डिटेक्ट कर सकते. फ्रीक्वेंसी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट वर्ड. Is this is all we can do in sort of researches that we are doing in 1 week or 2 weeks. Okay, allergic reactions. How specific is this? What kind of an allergic reaction? Is it a skin reaction? Is it a respiratory tract reaction? What is the allergic reaction that I am detecting? Are more in clean areas than so let me just write something for you here. Detect. I want to detect. So is this specific? I mean, what if you detect?
yeah, I mean, I'll go and ask maybe 100 people, आपको कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है? वो सबसे पहले तो मुझसे ये पूछेंगे कौन सा एलर्जिक रिएक्शन, उसमें क्या होता है? ओके, so basically let me just frame it for you here. I'm only going to frame one objective in every project. You need to frame the rest of your objectives according to that. Okay, compare the frequency of skin allergies between people from, now clean, I don't know how to qualify it because I don't know what the researcher is thinking. People from areas with little air pollution versus people from areas with severe air pollution. Hmm. Again, I'll tell you, मैंने खुद बनाया है, but I'm telling you, this is not specific enough. This is not specific enough at all. कंपेयर, यस कंपेयर पता चल गया, हम कंपेयर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग गिन रहे हैं, स्किन एलर्जी इज वेरी गुड, स्किन एलर्जी ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं ढूंढ रहे. बिटवीन पीपल, हाउ मेनी पीपल, how big is your sample going to be? With areas, it can only be one area, from an area with little air pollution versus people from an area with severe air pollution between June to September. This is a smart objective. वो ऊपर जो लिखा है ना, वो the researcher is thinking, but the researcher is unable to communicate how he or she wants the objective to work. So this is specific, this is measurable, this is achievable. I'm going to go and ask about skin allergies. I'm going to find two areas. एक में ढेर सारी air pollution है, एक में नहीं है. एक गांव है, एक शहर है, right? And then I also know about the months when I'm going to do it. And at the end of those months, my research should be finished. That is time bound. Now your objective is completely framed to be a smart objective. Okay, so whoever has this, I'm going to save it here, we'll get the document. Whoever has made this project will make these two according to this. By the way, ये दोनों जो है ना वो उसमें आ गए हैं, वो पहले वाले objective में आ गए हैं. So it's okay to have just one objective. It's okay. Okay. And the title, people living in tidy areas, na, 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 na. So now you know how you need to alter your title as well, because your title is not communicating what your research is focused on. It is a case control, ये researcher ने खुद लिख के भेजा है और बिल्कुल ठीक है. It is a case control study. Okay, so I'm just going to mark it in green. ठीक है जी, आपकी रिसर्च जो है वो हमने चेक कर ली. आई डिलीवर्ड व्हाट आई प्रॉमिस्ड and I gave you a smart objective, and now I'm sure you know what to do with your research. Okay, on to the next project. What is the perception, attitude, and knowledge of medical students and faculty members towards AI? It's a very good question. It's a well framed question. And it is pretty specific. Okay, परसेप्शन ढूंढ रहे हैं हम, एटीट्यूड ढूंढ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इस स्टडी को क्या कहते हैं? सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर. दिस इज ए कैप सर्वे which is knowledge, attitude, and practice. Okay, and we are doing medical students and let me just add medical faculty members towards AI in healthcare. It's a caps, और AI नहीं लिखना, artificial intelligence लिखना है, ठीक है? क्योंकि टाइटल में कहीं पे भी वो एब्रीविएशंस नहीं होती है. ओके,
टू डिटर्मिन द एटीट्यूड नॉलेज एंड परसेप्शन ऑफ, ये प्रैक्टिस होती है, आपने परसेप्शन लिखा, खैर है, एआई इन क्योंकि परसेप्शन और एटीट्यूड रफली एक ही जैसी चीजें हैं. Perception is just the noun, it's actually a verb, but I'm perceiving something, and as a result of that, I form an attitude. In healthcare, among now to compare and contrast the differences, similarities between among both parties, to assess. Perfect. Nothing wrong with this. Very good. Okay. AI in healthcare, friend or foe perception. ये कैची सा टाइटल बनाया हुआ है, ये भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है. वेरी गुड. And whoever has sent this, I don't know, I don't remember all the names, I'm sorry, but whoever has sent this, you have a high chance of getting published as well, because you're already there. And this is a case control. I don't know. Yes, it can be a case, but case नहीं है ये ना, क्योंकि दोनों AI को expose हुए हैं. स्टूडेंट भी एक्सपोज है और फैकल्टी भी एक्सपोज है. सो जब वो दोनों एक्सपोज है तो केस कौन है और कंट्रोल कौन है? ऐसे नहीं करना, आपने लिखना है क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव. ये आपकी स्टडी का डिजाइन है. ओके, गुड जॉब. एआई वाले खुश रहे, आपने अच्छा काम किया. वेरी गुड. देन वी हैव दिस हाईली टेक्निकल स्टडी एक्चुअली, जिसने भी भेजी है. वेरी गुड. What is the difference in bone mineralization between premenopausal and as compared to इतना इतना years? अच्छा, एक बात है बच्चे, आपने जो बैकग्राउंड सर्च करनी है ना, आपने एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन पाकिस्तान ढूंढनी है. क्योंकि 45 पे हमारे यहाँ खवातीन, मतलब कबाइली खवातीन माशाल्लाह से बच्चे पैदा कर रही होती हैं. सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट. ये एज आपने इसमें चेंज करनी हो सकता है आपको चेंज करनी हो. ओके, बाकी चीज बहुत अच्छी है, चीज बिल्कुल सही लिखी हुई है. असेस फॉर प्रेजेंस ऑफ अ मेजरेबल डिफरेंस. ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक भी है, ठीक है, मेजरेबल भी है, लेकिन असेस, दिस इज व्हाट यू, प्रेजेंस ऑफ अ मेजरेबल डिफरेंस. असेस फॉर नहीं है, ये आप लिखोगे कंपेयर फॉर प्रेजेंस ऑफ इतना 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 बिटवीन इतना इतना, आपने एज उसके मुताबिक लिख लेनी है. कंपेयर डिफरेंट डिफरेंस इन डाइट रिच इन कैल्शियम इतना 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 इतना. इट्स ओके, इट्स अ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, बट आई डोंट नो, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ बोन मिनरलाइजेशन लिखी हुई है अपने रिसर्च क्वेश्चन में. तो फिर आप बोन मिनरलाइजेशन के साथ साथ एंड डाइटरी हैबिट्स भी लिखोगे. रिसर्च क्वेश्चन में सारी चीज लिखनी है, उसके बगैर ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हो आप. कंपेयर डिफरेंस इन फिजिकल एक्टिविटी, तो फिर आप ऐसा करो ना, क्या हो ये तो बहुत ही वो हो गया, ऐसा करें एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस. ये आ गया, ठीक है, बन गया आपका रिसर्च क्वेश्चन भी बन गया. वैसे चीज बहुत अच्छी है. वेरी गुड, गुड जॉब. डिफरेंस इन इतना इतना, बोन मिनरलाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, और हेल्थ एंड हेल्थ केयर चॉइसेस. ये आपकी चीज पूरी हो गई. क्रॉस सेक्शनल स्टडी, नो, दिस इज आपका जो केस है वो प्री मेनोपॉजल है या पोस्ट मेनो, आपका एक कंडीशन है, आप मेनोपॉज के आगे पीछे वाले लोगों को देख रहे हो. सो दिस इज एक्चुअली ए केस कंट्रोल स्टडी. आप मेनोपॉज की खवातीन और नॉन मेनोपॉज की खवातीन को देख रहे हो, एक में हो चुका है एक में नहीं हुआ, आप उन्हें कंपेयर कर रहे हो. सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी. सर, it's also a good publishable study. Okay, okay ji. What are the factors contribute to motivation and goal setting behavior of topper student, and how do these differ? Very good, very smart question. Everybody wonders about that. To identify the key factors that contribute to motivation and itna itna. So bache, what if you identify? Hmm?
आई एम नॉट सेइंग कि नहीं गलत है, आइडेंटिफाई इज अ वर्ब एंड यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, but it is not fitting. What are the key factors contribute to motivation, goal setting, इतना इतना, how do these differ? आपकी एक comparative study है। तो आप सिर्फ टॉपर के लिए एक ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, और वो भी आप बहुत स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स फॉर एकेडमिक सक्सेस, सॉरी मैंने गलती की, आई थिंक वो ओरिजिनल चीज मुझे वहां छोड़नी चाहिए थी, मैं उसके साथ नीचे अलग से लिखती हूँ। टू आइडेंटिफाई की फैक्टर्स contributing to success of or academic success, क्योंकि बाकी जिंदगी उनकी खासी नाकाम भी हो सकती है, ऑफ हाई हाई स्कोरर्स और हाई अचीवर्स, जैसे आपने टॉपर लिखा है, लेकिन बाकी दुनिया में वो टॉपर लफ्ज नहीं बोला जाता, हाई अचीवर, या हाई अचीवर इज अ गुड, हाई अचीविंग स्टूडेंट्स ऐसे करके कर दो। ये टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन, ओके, सो योर रिसर्च, देखो प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन जो है ना, ये रिसर्च का मकसद होता है, यू डोंट नीड टू आउटलाइन इट इन योर ऑब्जेक्टिव्स, ये बाय डिफॉल्ट ये चीज जो है ये मौजूद है आपकी रिसर्च में। टू कंपेयर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, टू कंपेयर बिहेवियर्स ऑफ टॉपर्स, लेकिन देखो एक गलती है इसमें, यहाँ पे आपने कहा है की फैक्टर्स, ठीक है, वो कोई उनकी आदतें हैं, उनकी अच्छी बातें हैं, सारा कुछ है, यहाँ पे आप बिहेवियर पे आ गए हो। सी हाउ इट इज नॉट एक फ्रेम में नहीं फिट हो रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, कहीं पे आप की फैक्टर्स कह रहे हैं, कहीं पे आप बिहेवियर्स कह रहे हैं, सो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, और यहाँ पे भी आपने फैक्टर्स कहा है ना, फैक्टर्स कहा है आपने, सो इसको भी फिर आप इसको आपने चेंज करना होगा। टू आइडेंटिफाई की फैक्टर्स हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका होगा to compare and contrast the high achieving group with um, academic failures from the same class, or presence absence of certain factors। अब ये इसमें certain factors is non specific, ये बात इसमें अच्छी नहीं है, लेकिन this is the best I can do because I don't know how you are thinking or what factors you are going to find। ठीक है, सो ये वाला मैंने आपको देखो दो ऑब्जेक्टिव लिख के दे दिए, मैंने कहा था मैं एक ऑब्जेक्टिव लिखूंगी, लेकिन उसके बजाय मैंने आपको दो लिख के दे दिए हैं। बीच वाला ऑब्जेक्टिव अगर आप निकाल भी दें तो कोई मसला नहीं, ओके। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ये ठीक है। अब कंपैरेटिव एंड मिक्स मेथड आपने लिखा है, ये इसका मिक्स मेथड जो है, आई डोंट नो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ मिक्स मेथड, बट मिक्स मेथड इज अ वेरी हाई लेवल रिसर्च। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, हेलो कैप सर्वे, हाँ ला रहे अपने का, यस एब्सोल्युटली, कैप की ही बात हो रही थी, गैप्स का भी बता दें। आप देखो आपकी स्टडी में जो नॉलेज गैप आइडेंटिफाई हुआ है वो ये है कि मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में हेल्थ हैबिट्स का और खाने पीने की आदतों का क्या फर्क है, आपके यहाँ ये है। सो गैप, इज देयर अ नॉलेज गैप, जिसके लिए आप बैकग्राउंड सर्च कर रहे होगे ना, वो नॉलेज गैप है कि प्री और पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में नंबर एक बोन मिनरलाइजेशन में फर्क है, हाँ है, बहुत ज्यादा स्टडीज हुई हुई है, खाने पीने का फर्क है वो चेक करना है, एक्सरसाइज का फर्क है उसके लिए आपने स्टडीज चेक करनी। सो नॉलेज गैप ये है कि पोस्ट और प्री मेनोपॉजल औरतों के ये डिफरेंसेस क्या पहले स्टडी हुए हैं, आया ये पाई भी जाते हैं या नहीं। ठीक है जी, अच्छा। सो कंपैरेटिव एंड मिक्स मेथड जिसने भी सजेस्ट किया है ना, वो मुझे ये समझा दे
कि उसको मिक्स मेथड का मतलब पता है, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च भी आती है जो मैं नहीं पढ़ा रही यहाँ पे आपको। मैं आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव पढ़ा रही हूँ। ये 8 हफ्ते की इंटर्नशिप है। मैं अगर आपको अडॉप्ट कर लूँ, घर ले जाऊं, तो फिर शायद मैं आपको क्वालिटेटिव पढ़ा सकती हूँ। दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ओके, बट अदरवाइज या आपका प्रोजेक्ट मैंने चेक करके आपको बता दिया। What can be done to reduce the incidences? और इंसिडेंस तो मैंने कहा था कि ये तो अलहराम है, मतलब इंसिडेंस और प्रेवलेंस नहीं बोलना। इंसिडेंस बच्चे, जब हम मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं ना, और सिर्फ आपने नहीं कहा, जिसका भी ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत से लोगों ने कहा है। इंसिडेंस का मतलब है the new cases of a disease or a phenomenon in a population at a fixed point in time. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर के बीच में जितने नए केसेस हुए हैं, वो इंसिडेंस है। इट्स अ स्टैटिस्टिकल टर्म, इट्स अ साइंटिफिक टर्म। जो हम इंग्लिश में इंसिडेंस कहते हैं ना, वो हम रिसर्च में नहीं कह सकते। इसी तरह प्रेवलेंस जो है, दैट इज द एग्जिस्टिंग केसेस इन अ पॉपुलेशन ओवर अ सेट टाइम पीरियड। और वो भी हमें क्वालिफाई करना होता है। प्रेवलेंस जो है वो इज अ साइंटिफिक टर्म, बायोस्टैट्स की टर्म है ये। सो प्रेवलेंस और इंसिडेंस हम अपनी रिसर्च के प्रपोजल्स में ऐसे नहीं लिख सकते जब तक हम पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च ना कर रहे हो। हमारी रिसर्च पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है। हम तो सैंपल्स ले रहे हैं ना, छोटी छोटी पायलट स्टडीज कर रहे हैं, कैप सर्वेस कर रहे हैं। हम तो अभी रिसर्च भी सीख रहे हैं। सो वी शुड नॉट बी यूजिंग दीज टर्म्स, ओके। ड्रास्टिक, अच्छा, सो दिस द रिसर्च क्वेश्चन इज विच इज वेरी गुड, बट here is my problem with the research question. It is over ambitious. जो 8 हफ्ते की मैं आपको इंटर्नशिप करा रही हूँ, उसमें मैं ना, मतलब कि दुनिया के मसाइल का हल हम लोग इसमें नहीं ढूंढ सकते। Although it's a very good research question, and I hope that we, are able to find the answer someday. What can be done to reduce the drastic climate change and global warming? That is something जो मैं आपको नहीं करवा सकती, और ना आप इसको खुद कर सकते हो, जिसने भी सजेस्ट किया है ये। मैं आपको बताऊं एक आसान तरीका इसका, और वो मैं खुद आपको इसलिए लिख के दे रही हूँ बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग, बट आई डोंट थिंक इट इज फीसिबल। ये किया नहीं जा सकता, ये अचीवेबल नहीं है इस टाइम पीरियड में। सो यू कैन राइट द knowledge and attitudes of medical students or nursing students or A level students or HSM students, I don't care, जो भी है, about the catastrophic, थोड़ा सा ड्रामा डाल देते हैं, effects of climate change in coming years। ठीक है जी। सो इसमें हम इसको क्वेश्चन बनाने के लिए, ये भी व्हाट वाला क्वेश्चन है। What is the knowledge and attitude of certain students about the catastrophic effects? ये अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप काम कर सकते हो, जिसको आप उसके बारे में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। इस क्वेश्चन को लेके आप एक पब्लिकेशन छाप सकते हो। मतलब आप जाके लोगों से पूछें। सबसे पहले तो आपको खुद पता हो ना कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हैं क्या। आपने अपनी लिटरेचर सर्च की भी हो, एंड यू नो व्हाट आर द कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नन ऑफ देम इज स्मार्ट। आई थिंक मैंने आपको फीडबैक में भी शायद लिखा हो कि none of the objectives is smart. Finding the solution to the root cause of problem, contributing to the climate, the climatic changes and global warming. Finding the solution, देखो इसके लिए तो सबसे पहले हमें शायद ईपीए की किसी लेबोरेटरी में काम करना होगा, और वो इज नॉट फीजिबल। फाइनल एनालिसिस करते हैं ना हम क्वेश्चन की। सो उसमें पहली चीज है कि ये कितना फीजिबल है। ये तो बिल्कुल नहीं फीजिबल। फिर ये है इंटरेस्टिंग, तो बहुत है जबरदस्त, मैंने आपको फीडबैक में भी लिख के भेजा होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर नॉवल, मतलब बहुत से लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सारे लोग, ठीक है। सो बेसिकली हाउ आई विल अमेंड योर ऑब्जेक्टिव टू मेक इट स्मार्ट।
फाइंडिंग द सोल्यूशन को मैं नहीं कहूंगी, ये सेशन अब यहाँ पे मैं रोकूंगी 10 मिनट के लिए, आगे अभी 10 मिनट है मेरे पास, लेकिन मैं 5-10 मिनट के लिए रोकूंगी। फाइंडिंग द सोल्यूशन हम नहीं कर सकते इस रिसर्च के जरिए। वो जो रिसर्च क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें आप ये लिखोगे, टू डिटरमिन द attitudes of something something students about solutions to the problem of global warming। आसान हो गया ना। अब ये आपका आपके लिए ये स्मार्ट भी बन गया। आप एटीट्यूड ढूंढ रहे हो, स्पेसिफिक कर दिया आपने, डिटर्मिन कर रहे हो, आप एक चीज को आप एनालाइज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो उसको। फिर कोई खास तबका है स्टूडेंट्स का जिसमें आप देख रहे हो। सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम अबाउट, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, स्पेसिफिक बनाने के लिए, अबाउट लेटेस्ट साइंटिफिक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये स्टूडेंट्स के साथ ये भी लिख सकते हो कि वो कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो मेजरेबल भी हो जाएगा और वो सारा कुछ उसकी बातें सही हो जाएंगी। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अमेंड योर ऑब्जेक्टिव्स टू मेक। एक तो आपने अपना क्वेश्चन को फाइनल एनालिसिस में देख के सबसे पहले तो फीजिबल बनाना है, कि वो हो तो सके ना, वो आप सिर्फ सोच तो नहीं रहे हैं, वो तो आपने करना भी है। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा क्या काम करना है, कि आपने उसको स्मार्ट बनाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, टू डेवलप स्ट्रेटजीज दैट आर फीजिबल टू इम्प्लीमेंट ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, अब इस रिसर्च में आई डोंट नो हाउ यू कैन डेवलप स्ट्रेटजीज, बिकॉज डेवलपिंग स्ट्रेटजीज इज अ वेरी बिग एक्सरसाइज, एंड आई डोंट थिंक कि आप सिर्फ लोगों से पूछ के वो स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आप ये लिख सकते हैं, टू एक्सप्लोर द आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ whoever आपका जो स्टडी ग्रुप है, अबाउट पॉसिबल डेली, आपने डेली बेसिस लिखा हुआ है ना, कि हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे, हम ऐसे काम, हम इन पोल्यूशन से बच जाएं। पॉसिबल सिंपल tasks done on daily basis to help reduce global warming। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे सोच रही हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ कि आप कैसे सोचें। ऑल्दो आई शुड नॉट बी टीचिंग यू व्हाट टू थिंक, आई एम टीचिंग यू हाउ टू थिंक, to explore the ideas and suggestions of students about possible simple tasks done on a daily basis to help reduce global warming, to discover the changes needed at government level. I don't like government, so yeah, I have no comment for this. You can even take it out. और इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हो। To open avenues and gateways for more sophisticated and scientific research into the problem of ग्लोबल वार्मिंग। सो गो के आपकी स्टडी तो बड़ी सिंपल सी है, छोटी सी है, लेकिन आपकी विजन बहुत बड़ी है। मतलब आप बड़े चालाक हो और आपको पता है कि मैंने ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल करनी है। मतलब मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च करें। सो आई एम ओपनिंग एवेन्यूज एंड गेटवेज फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। सो आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू हियर। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की टू, अब आपने अपना वो खुद ही चेंज करना होगा। ठीक है। ये जो है ना, ये आपका रिसर्च का टाइटल है। ये क्वेश्चन मार्क यहां से चला जाएगा, आपने व्हाट हटा दिया वहां से। ठीक है।
फिर है केस रिपोर्ट स्टडी और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। ये इनमें से कुछ भी नहीं है बच्चे, मैं बताती हूँ, ये कैप सर्वे है। ठीक है, विच इज ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, ये हो गया आपका जनाब, ये भी हो गया। ठीक है जी, यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट, डोंट गो क्रेजी राइटिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो आई हैव जस्ट 4 minutes लेफ्ट हेयर, और अभी मेरे मतलब आधी चीज रहती है मेरी, जो मैं आगे आप लोगों के साथ कवर करनी है, मैंने वो सारी की सारी। बट आई एम गोइंग टू टेक ए शॉर्ट 5 minutes break and I'm going to come back and then do another 30 minutes वाला session with you. Think of your questions and come right back. ठीक है, जो वापस नहीं आएगा वो अपना प्रोजेक्ट देखने से महरूम रह जाएगा, और जो जिसका प्रोजेक्ट हो चुका है, अगर वो वापस ना आया तो वो मजीद कुछ सीखने से भी महरूम रह जाएगा। तो और जो महरूम होते हैं वो मरहूम हो जाते हैं। सो या, आई एम गोइंग टू सी यू, दिस इज 7:40, और आई थिंक 8:40 फॉर, no, this is 7:40 in Pakistan, sorry, completely. 7:45 I'm going to come back, okay, and we're going to cover the rest of the thing. So 7:45 Pakistan time. Okay ji, see you inshallah.